Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 2, editing text in Word. I hope you have revised your chapter number 1, okay? So now let's see the learning in this chapter, editing, correcting spelling errors, features of Word, the source in Word, parts of Word 2016, undo and redo, inserting, selecting, erasing, copying, moving text. Okay, so children, as we know that Word is a type of word processing application software used for typing text. Here we will learn to text. Here we will learn to text document in Word 2016. So बच्चों, जो आपके सिस्टम में वर्ड एप्लीकेशन है उसमें आप क्या करते हो, लेटर टाइप करते हो, स्टोरी लिखते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, कोई भी टाइप का टेक्स्ट आप उसमें क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट आप उसमें क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम कॉन्सेप्ट्स फॉर द एप्लीकेशन वर्ड. Okay, so the first topic we are going to cover is editing. Okay, editing आपको पता है क्या होती है, जो चीज पहले से है उसमें थोड़े से चेंजेस करना. ओके, सो वर्ड जो है बच्चों, ये माइक्रोसॉफ्ट स्वीट के अंदर ये एक प्रोग्राम है. मेकिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. अब बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग, राइट? So now, like inserting or deleting a line, inserting a page, copying or moving text. Suppose you are making some changes. For example, you are inserting a picture, inserting a text, deleting a particular line, deleting a picture, inserting a page, copying or moving text. Whatever type of task you are doing, just making some changes is called an editing. Now, features of Word. So in Word, we can change the existing text, align the text, make our text attractive, insert pictures and tables, copy and move text, preview the document before printing. So these all are the features of Word where you can change the existing text. Okay, you can change the paragraph, you can change the टाइप टेक्स्ट विच वॉज रिटन प्रीवियसली. ओके, आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट कर सकते हो, मेक, अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, बोल्ड बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, पिक्चर्स और टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी एंड मूव कर सकते हो, ऑल्दो प्रीव्यू भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को कि प्रिंटिंग से पहले वो कैसा लगेगा. Now, parts of Word 2016 screen. So let's have a look at the parts of Word 2016 screen. So the first is quick access toolbar, title bar, ribbon, vertical scroll bar, document area, status bar, horizontal bar, then cursor, ruler, file tab. So these all are the parts of the Word 2016. Let's explore all of them one by one. The first one is ribbon. The ribbon is a long bar that contains various jobs. Various tabs. Okay, so each tab has a commands divided into groups. For example, home tab contains clipboard, font and paragraph, styles and editing group. So बच्चों, ribbon जो है वो एक long bar होती है आप जिसमें various tabs present है, like home tab, insert tab, design tab. Okay, so इन tabs में आपके पास क्या होते हैं, कुछ groups होते हैं, जैसे कि home tab है, home tab में clipboard group है, font group है, paragraph group है, style and editing groups है. यहाँ पे आप इसे देख भी पा रहे हैं. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप. ओके, एंड दिस इज टैब. ओके, क्लियर? आगे बढ़े. Now, did you know MS Word is a word processing program? It is used to type letters, reports and other documents. You will find it very useful for yourself. My bad student, let's read it again. Okay, so you will find it very useful for yourself. Microsoft is designed by, Word is designed by Microsoft. अब यहाँ पे बच्चों समझिए, Microsoft Word हमें पता है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें आप लेटर्स टाइप कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो और किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो. साथ ही बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप इसमें किसी भी टाइप को फॉर्मेट करने के बाद इसे प्रिंट भी निकाल सकते हो. And you can also share it with your friends. Okay, so बच्चों इस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हो. और साथ ही बच्चों ये किसके साथ आता है, मैंने अभी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट स्वीट के साथ आता है जो कि डेवलप्ड बाय है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ओके, नाउ लेट्स सी इंसर्टिंग टेक्स्ट. So just place the cursor where you want to add text and start typing. The new text gets added and the old text is shifted towards the right as you type. So here New Delhi is the capital, is the text already present here. Now you want to type New Delhi is the capital of the India. So the
text you have written here is of India. So आपने इस टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कहाँ पे कर्सर रखा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अपना कर्सर रखा होगा एंड देन यू स्टार्टेड टाइपिंग. जैसे आपने टाइप करा तो आपका वो टेक्स्ट क्या हो गया? insert हो गया. So this is how you will insert the text. Now let's see the tidbit. To insert a blank line between two existing line, place the cursor at the end, okay, at the end of the line, after which you want to insert a line, press the enter key. Now अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर आपको एक ब्लैंक लाइन किसी दो लाइन के बीच में इंसर्ट करनी है तो आपको अपने कर्सर को कहाँ ले जाना है? उस लाइन के एंड में ले जाना है एंड यू हैव टू प्रेस द एंटर की. ओके, जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो? एक लाइन को इंसर्ट करना चाहते हो. नाउ इंसर्टिंग अ ब्लैंक पेज. टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन. आप कहाँ क्लिक करेंगे? इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे रिबन के एंड क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज. नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज. हियर यू कैन सी फर्स्ट click on insert tab, then you are going to click on the blank page. This is the option, and when you will click here from the pages group, okay, always remember the group, so the new page will get added. Now Quizmania, name all the tabs present on the ribbon of the Word 2016 file. I mean, here you can see the tabs: home tab, insert tab, design tab, layout tab, references tab, mailing tab. Just type the name of the tabs present in Word 2016. Okay, now moving forward, let's see how to select text. We can select the text, I mean select the part of the text or whole text using either a mouse or a keyboard. So selecting text using a mouse, to select a text or a word, double click on the word. To select a line, click on the front line, I mean click in front of the line. Keep the pointer in the left margin. To select the paragraph, click the left mouse button thrice anywhere in that paragraph. To select the sentence, click the left mouse button on the sentence while holding the control key. Now बच्चों, यहाँ पे आपको पहले identify करना है what you want to select. Suppose you want to select a word, just double click, okay, just double click on the word. Okay, now if you want to select a line, click in the front of the line, keeping line the pointer in the left margin. And if you want to select a paragraph, click the left mouse button thrice. How many times? Thrice in that paragraph. To select a sentence, click the left mouse button on the sentence while holding the control key. Okay, so here you can see this is the selected word, this is the selected line, and this is the selected paragraph and selected sentence. So I hope, is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's see selected text using a paragraph. What are we going to do? We are going to use, we are going to learn selecting text using a keyboard. Okay, we have learned using a keyboard. Now we are going to use a key. जो हमने पहले अभी लर्न किया था यूजिंग अ माउस लर्न किया था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड. ओके, सो टू सिलेक्ट अ लेटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कर्सर, प्रेस शिफ्ट प्लस राइट एरो की. ओके, अगर आपको किसी लेटर को क्या करना है? सिलेक्ट करना है. टू सिलेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द कर्सर, press shift plus left arrow key. Okay, and to select a word towards right of the cursor, press control plus shift plus right arrow key. इससे आपका क्या आएगा? word select होगा. and to select a word towards left of the cursor and press control plus shift arrow key. so बच्चों यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है. now what you have to do in that case, you have to use the buttons of the keyboard. okay, and which buttons? shift, control and arrow key. Okay, so these keys will help you to select a word, letter or a line or a sentence. Okay, now let's move forward, and here erasing text. So the backspace key and delete key are used to erase text. So erasing a character, place the cursor to the right of the character to erase and press the backspace key. अब बच्चों, अगर आपको किसी कैरेक्टर को इरेज करना है तो आपको अपने कर्सर को कहाँ रखना पड़ेगा? राइट ऑफ द कैरेक्टर, एंड जस्ट क्लिक ऑन द बैकस्पेस की. ओके, एंड प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर टू इरेज and press the delete key. Okay, so that's the major difference. And erasing a word, you have to do the same, but while pressing the control key. Place the cursor to the right of the word to erase and press control plus backspace key. Okay, and place the cursor to the left of the word and erase, to erase, and press control plus delete key, then the word will be erased. Erasing a block of text. So select the text,
आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बता रखा है एंड प्रेस बैकस्पेस की और डिलीट की. Is it clear? Now copying text. To copy the text, follow the given step. Step number 1. Copying text means to create a duplicate copy of the selected text. This is done using copy and paste commands. Step number 1. Select the text you want to copy. आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हो. ठीक है, कॉपिंग टेक्स्ट का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों, जैसे कि आप किसी चीज का डुप्लीकेट चाहते हो, वो चीज यहाँ पे भी है बट आपको पता है कि इसे टाइप करने में दोबारा टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट. सो आपका उस पर टाइम सेव हो जाएगा विद एनर्जी. From Home tab, click on the copy from the clipboard group. Move the cursor to the place where you want to paste your text and click on the paste button from the clipboard group. So let me tell you the steps again. First of all, select the text, then click on the Home tab. Okay, in the Home tab you will see the clipboard group and clipboard group में आपको कहाँ click करना है, copy button पे. कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कर्सर वहां लेके जाना है जहां आप टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, पेस्ट. फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हियर यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट, पेस्टेड टेक्स्ट. क्लियर? नाउ लेट्स सी मूविंग टेक्स्ट. Moving text means to shift the selected text to some other place. Moving text का मतलब है आप पहले वाली जगह से हटा रहे हो और दूसरी नई जगह शिफ्ट कर रहे हो. This is done using the cut and paste method. I mean commands. To move the text, follow the given steps. Select the text you want to move, and after that, from the Home tab, click on the cut button from the clipboard group. First, you have to select the text. Just click on this button. This is button. Okay, cut button in the clipboard group, and after that move the cursor to the place where you want to paste your text and click on the paste button from the clipboard group. All the steps are same. The major difference between copy and paste and cut and paste is just selecting the option copy and cut. Okay, now let's move forward and here let's see thesaurus. Okay, but before that let's see shortcut key. Control C to copy, Control X to cut, and Control V to paste. Did you know arrangement of text to the margin is called a alignment? अब बच्चों यहाँ पे alignment क्या है? Alignment is the thing how you are arranging your text to the left, to the right, or in the center or the justify. Okay, now let's see the next feature of the word thesaurus. Okay, a thesaurus is a tool to find synonyms, word with similar meaning, and antonyms, word with opposite meanings for a given word. The primary purpose of using thesaurus is to enhance one's writing by providing a variety of vocabulary choices which can help avoid repetition and add nuisance to the language used. To access the thesaurus in word, follow the following प्रोसीजर. बच्चों thesaurus जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपको अगर सिनोनिम फाइंड करना है या एंटोनिम्स फाइंड करना है, so this is the most useful and very helpful feature. So how you are going to access it? So highlight the word which synonym is to be checked. आपको उस वर्ड को हाईलाइट करना है एंड राइट क्लिक कीजिए और सिनोनिम्स का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल के आएगा उसमें से. A list of suggested synonyms will appear and you can choose the most appropriate one for your context. Now let's see here. You can see this is, these are the words, okay, which are present here for word find. Okay, so what can you do here? You can just replace it with the help of these words. Okay, so this is how we are using this feature. Here you can see we have selected the thesaurus feature and this is how you will use it. Okay, now let's move forward. So now let's move forward and let's see here. Alternatively, you can use a thesaurus tool located in the review tab for the word of the word ribbon. Clicking on the thesaurus button will open a sidebar where you can enter the word you want to find synonyms for the browse a list of suggested option. Here the same thing is happening whatever I have told you. आपको क्या करना है बच्चों, रिव्यू टैब में जाना है. रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप में आपको ये thesaurus जो आपका बटन है उस पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन यू विल सी दिस will get open, okay, on the right side of the window and you can choose any word, okay,
for the word find. Okay, first of all, before doing this, what you have to do, you have to select the word. Is it clear? Let's move. Now let's see the next topic, correcting spelling error. So misspelled word in the Word document can be checked and corrected using built-in dictionary. Word checks incorrect word automatically and marks a red wavy line under the words not found in the dictionary. To correct the misspelled word marked with the red wavy line, follow the given step. अगर बच्चों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर्स हैं तो वो भी आप ठीक कर सकते हो by using dictionary which is already present in your system in your Word application. To correct the misspelled word marked with red wavy line, follow the given step. Right click on the marked word. Okay, right click करना है जहां पे आप ये रेड कलर की wavy line देख रहे हैं. A pop-up menu will appear showing the suggestion correction. Okay, so when you will click here, you will see you are getting the right word. Okay, for your wrong misspelled word, select the correct spelling from the list. The incorrect word gets replaced with the selected word. Okay, now undo and redo commands. Undo is used to used to cancel a command given earlier. Undo जो आपका command है वो आप क्यों यूज करते हो? जो आपने command पहले दिया है उसे cancel करने के लिए. To undo, click on undo button on the quick access toolbar. Next is redo. Redo is used to reverse the action undo. Okay, to redo, click on redo button on the quick access toolbar. तो undo बच्चों कब यूज किया जाता है? अगर आपने सपोज कोई मिस्टेक कर दी है तो आप क्या कर सकते हो, उसे कैंसिल कर सकते हो अपने प्रीवियस एक्शन को. और साथ ही बच्चों जो redo यूज होता है वो undo के एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्विज मैनिया, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? ओके, सो अलाइनमेंट मींस आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो इन पर्टिकुलर लाइन, राइट साइड, लेफ्ट साइड or center or justify. Now tidbit shortcut keys: Control Z to undo, Control Y to redo. Do not touch a computer without teacher's permission in your computer lab. Okay, now let's see vocabulary. Editing is to make changes in an existing document. Inserting text means to add something to piece of writing. Is it clear? Now let's see in a nutshell, what is a type of word processing application software used for typing text. Making changes in an existing document is called editing. अगर आप पहले से कोई existing document में changes कर रहे हो, that is called editing. We can select the part of the text or whole text using either a mouse or a keyboard. हमने दोनों use किया था. Now backspace key and delete key are used to erase text. Copy and paste command are used to create a duplicate copy of selected text, and cut and paste command are used to shift the selected text to some other place. जो कि मैंने आपको बताया था दोनों में major difference, one for duplicating and one for moving. Now word checks incorrect word automatically and marks a red wavy line under the words not found in the dictionary. So what you have to do in that case, right click on it and choose the correct spelling. Undo is used to cancel a command given earlier, and redo is used to reverse the action of undo. So I hope student you have understood these points, you have understood the chapter. So now revise the chapter and check your knowledge by doing the exercise given after the chapter. So now I'm going to meet you in the next class with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring, students. Bye bye, students.